there is another reaction, 2NO2 plus F2 reacts to produce 2NO2F. Law for this reaction or experimental rate law has been found to be equal to first order with respect to NO2 and first order with respect to F2. Yeah. So again here also the problem which we are going to face is in the in the balanced equation we have stoichiometric coefficient of NO2 as 2. Yeah. Now how this can be explained? So this simply means if this is the rate law, that means the slowest state will be the one in which one molecule of NO2, one molecule of NO2 and one molecule of F2 will be interacting, right? प्रोडक्ट्स क्या क्या फॉर्म कर सकते हैं NO2 NO2 F2 के साथ ये मॉलिक्यूल दोनों मॉलिक्यूल कंबाइन करके मे बी दो पॉसिबिलिटी जनरेट कर सकते हैं. एक पॉसिबिलिटी बनता है हमारा इस तरह के कंपाउंड का या कॉम्प्लेक्स NO2F2, ठीक है, या फिर दूसरा बनता है NO2F का. अगर ये बनता है तो ठीक है, या फिर ये बनता है तो इसके साथ एक क्लोरीन भी बनना चाहिए such that the final things can be achieved. And दूसरी चीज दूसरा स्टेप ऑफ रिएक्शन जो हो सकता है वो ये रिएक्शन हो सकता है. So we can have two possible sets of reactions. I'm going to write. पहला है NO2 plus F2 giving us NO2F2, and then NO2F2 may be reacting with another molecule of NO2 to give 2NO2F. Similarly दूसरा and obviously यहाँ पर ये जो है this is going to be slow step and this will be fast step. Yeah. And दूसरा set of reactions जिसके लिए पैरेलल हम दे सकते हैं वो कुछ इस तरह का हो सकता है NO2 plus F2 giving us NO2F plus F, the free radical. Then this free radical combining with NO2 to form NO2F again. Yeah. And this one is going to be slow and this is going to be fairly fast. Okay. Now this reaction, this second or B type mechanism, A type mechanism, this will be step
A B-type mechanism is something which is more aligned to the perceived rate law. Why so? Uh, the simple thing is यहाँ पर क्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन के पास सॉरी यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और क्लोरीन का एक बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो फ्री रेडिकल बन रहा है उसके साथ एफ डॉट का रिएक्शन हो रहा है ठीक है नाउ एफ एफ की बॉन्ड ब्रेकिंग की एनर्जी एफ एफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट है एंड दैट इज व्हाई द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन इज जनरली गोइंग टू बी स्लाइटली हायर ऑन हायर साइड ठीक है मेकिंग द रिएक्शन स्लोअर जबकि यहाँ पर जो है वो क्या है बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो द एक्टिवेशन एनर्जी की जनरल रिक्वायरमेंट इज नॉट गोइंग टू बी दैट हाई हेलो और स्टेप वन में यहाँ पर स्टेप वन में द there is a bond breaking which is happening and therefore activation energy is expected to be higher uh, and hence the rate is expected to be slower ठीक है on contrary यहाँ पर सिर्फ bond formation हो रहा है the activation energy is expected to be lower and the reaction is expected to be faster ठीक है यहाँ पर अगेन अगर हम देखते हैं तो द स्टेप सजेस्ट दैट देयर इज नो बॉन्ड ब्रेकिंग व्हिच इज हैपनिंग इन दिस प्रोसेस ठीक है और हम इसको स्लो प्रोसेस बोल रहे हैं एंड यहाँ पर एफ एफ बॉन्ड इज इनवेरिएबली ब्रेकिंग ठीक है दैट इज असिस्टेड बाय अ फॉर्मेशन ऑफ अनदर बॉन्ड आल्सो ठीक है ये फास्ट हो सकता है या स्लो हो सकता है बट यहाँ पर डेफिनेटली एक बॉन्ड ब्रेकिंग है तो एक्टिवेशन एनर्जी स्लाइटली ज्यादा यहाँ पे रहेगा ना कि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है ठीक है देयर इज ओनली बॉन्ड फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस और हम इसको स्लो स्टेप मान रहे हैं दैट इज समथिंग व्हिच कैन नॉट बी एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड ठीक है एम आई मेकिंग सेंस सो इस तरह की रीजनिंग जनरेट करके इस तरह की रीजनिंग के साथ we tend to uh, discriminate or we tend to discriminate different mechanisms and then find out the most right mechanism for any given reaction ठीक है another thing is ये intermediate जो है ये form हो रहा है and then sorry it's not intermediate this free radical is being formed as an intermediate and it is being consumed as well ठीक है तो अब एफ एफ फ्री रेडिकल अगर है मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट एफ एफ फ्री रेडिकल के लिए we can conduct certain tests to ascertain its presence ठीक है से ये अगर मैकेनिज्म हम देते हैं तो हमें एक चीज ये असर्टेन करनी होगी कि एफ का प्रेजेंस है कि नहीं एफ का प्रेजेंस we can test it with the help of its presence I mean with the help of H2O2 so that's not a big deal we can do that yeah but experimental proofs से I mean experimental proofs तो ठीक है बट ये फैक्चुअल प्रूफ जो थियोरेटिकल प्रूफ जो है हमारे बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं है तो एक्टिवेशन सबसे ज्यादा कंपेरेबल एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन टू स्टेप्स ज्यादा किसका होएगा तो
this actually fails. ठीक है, सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग पर एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी ज्यादा नहीं रहेगा. I mean, it is always going to be the case that जहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है वहां पर ही एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा. जहां सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उनकी एक्टिवेशन एनर्जी जनरली कम रहती है, कंपेरेटिवली कम रहती है. ठीक है. Similarly, we are going to take two more examples. Example 3. NO2 plus carbon monoxide gives CO2 plus NO. Now, for this, experimental rate loss has been like this. At temperature greater than 500 Kelvin, the rate is equal to concentration of NO2 into concentration of C, whereas at temperature less than 500 Kelvin, the rate is equal to G into NO2 square. And the proposed mechanism for the two things, that is at temperature greater than 500 Kelvin, we have or it is a single step where NO combines with okay. This is called transition state. Transition state for activated components. ठीक है. और furthermore, यहाँ पर भी ये लास्ट रिएक्शन होगा, इसमें ये वाला पोर्शन होगा. दिस वाज अ ट्रांजिशन स्टेट, शॉर्ट लिव्ड. ओके. ये ट्रांजिशन स्टेट जो होता है ये
बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, इसकी एनालिसिस नहीं कर सकते हम, ठीक है। बट इसके रिगार्डिंग केसेस हम लोग इस साइड में जो इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं उसके बेसिस पर हम लोग कर पाते हैं। मतलब यहाँ पर जो फॉर्म हो रहा है इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट, उसके बेसिस पर हम ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका हम एनालिसिस कर पाते हैं कि व्हाट इट माइट बी, ठीक है। और looking at the bonding pattern of this side, the product side and the reactant side, we can fairly approximate uh, how the bonding pattern would have been in the transition state. Okay. So at temperature greater than 500 Kelvin, because it has this type of rate law, so it happens to be a single step reaction. It happens to be a single step reaction. इसके अलावा कोई और हमारे पास तरीका नहीं होता है, we can explain this. But at temperature greater than, less than, at temperature less than 500 Kelvin, it is going to be a multi-step reaction with this kind of behavior. Step 1, NO2 combines with NO2 or it reacts with NO2 to form NO3 and NO. This is again a slow step. Then happens to be NO2, step 2, where NO3 combines with carbon monoxide to form CO2 and NO. Now this is fast. Because of this being a slow step, the rate law happens to be as stated second order with respect to NO2. Second order with respect to NO2. It produces NO3 as an intermediate, which then reacts with carbon monoxide to produce carbon dioxide and NO2. That is going to be a fast. Now see, दोनों ही steps में there is a bond breaking and bond formation which is taking place. एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ से इस नाइट्रोजन से ब्रेक हो रहा है और इस नाइट्रोजन के साथ फॉर्म हो रहा है, ठीक है. नाउ एंड यहाँ पर ऑक्सीजन का बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ ब्रेक हो रहा है और कार्बन के साथ फॉर्म हो रहा है. Now, the relative analysis of the two cases can certainly let us know that generally carbon oxygen का bond जो होगा that is going to be stronger than nitrogen oxygen bond. Carbon oxygen bond is going to be stronger than carbon oxygen nitrogen bond. And that too यहाँ पर जो ऑक्सीजन बॉन्डेड है NO3 है वो सिंगल बॉन्ड नहीं रहेगा, डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेशन फॉर्म कर रहा है, ठीक है. तो दैट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस. यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है दैट इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन बेसिकली तीसरे वाले ऑक्सीजन को दे रहा है और द रिएक्शन इज टेक, वो ऑक्सीजन ही ब्रेक होकर के CO के साथ आता है, ठीक है. Now, this part is obviously, I mean, anyway, the carbon oxygen bonds are generally stronger than
nitrogen oxygen bonds, and therefore this bond formation energy is going to be higher than the amount of energy required to break the nitrogen oxygen bond. Therefore, activation energy requirement is relatively lower, and the reaction is this step of the reaction is faster. Okay. Uh, Step 1 comparatively similar type of bonds हैं और activation energy जो है वो relatively higher है compared to second step, and hence step 1 is slower, and that is how we are able to explain the uh, reaction rate, experimental reaction rate of the above reaction. Okay. We are going to take another reaction, that is hydrogen iodine and hydrogen bromine reaction. Example 4. A H2 plus I2 gives 2HI. The rate law happens to be first order in hydrogen, first order in uh, iodine. सो इसमें कुछ ज़्यादा awkward होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से स्टोइचियोमेट्री भी हमको ये सजेस्ट कर रहा है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग टू मॉलिक्यूल्स ऑफ HI. ठीक है. एंड सो इज द रेट लॉ से भी हमको यही पता चल रहा है. सो इस रिएक्शन को दिस रिएक्शन इज eventually going to appear to us as a single step reaction, whereas reaction अब इसका B टाइप जो होता है जैसे H2 and Br2, इसका रिएक्शन this also produces HBr, बट इसका रेट लॉ जो होता है that has something happens to be first order in H2 and half order in Br2. Okay. Now, stoichiometry is suggesting that it should be, one molecule of H2 and one molecule of Br2 should be interacting, but that is not happening. Now, this half order dependency on Br, और इसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन करें? हेलो, हाँ बोलो. थोड़ा उससे ऊपर लीजिए ना, म्यूट कर. So what happens is this nature of rate law explains that the reaction is not a simple one. It's not a single step reaction. Rather, it is or it should be a complex reaction taking place in more than one step. Okay. Uh, the nature of a rate law suggests the reaction
must be a multi-step process rather than single step. ठीक है, अब स्टेप्स क्या है? तो इसके स्टेप्स में दो तीन चीजें हैं, और पहला चीज ये होता है कि स्टेप 1 इज कंसिडर्ड टू बी BR2 जो है वो हमारा इस तरीके से ब्रेक करता है and it forms two BR radicals, and this is actually a fast equilibrium step. Fast equilibrium step. Now fast equilibrium होने की वजह से what happens is रेट लॉ एनालिसिस BR2 के कंजम्पशन का करते हैं, तो अल्टीमेटली ऐसा आएगा कि द नेट रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ BR2 जो रहेगा that should or that must happen to, or that should happen to be इक्विलिब्रियम में अगर है तो इट मस्ट हैपन टू बी जीरो। ठीक है, जिस रेट पर BR2 फॉर्म हो रहा है और BR2 लूज हो रहा है दैट शुड बी इक्विलिब्रियम। अगर फॉर्म कर रहा है तो इक्विलिब्रियम में कहीं ना कहीं चीजें कुछ कुछ कंसंट्रेशन जो रहेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे फॉर पीरियड ऑफ टाइम। सो उस अप्रोक्सीमेशन वगैरह के हिसाब से तो इस स्टेप के लिए वी कैन हैव दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट दैट के इक्विलिब्रियम बी लाइक, ये अगर सो जनरली K1 और इसको K1 फॉरवर्ड एंड इसको K-1 लिखते हैं बैकवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। K इक्विलिब्रियम जो है that will become equal to K1 by K-1, which will also be equal to concentration of BR square divided by BR2 का concentration. Is it okay? Following it, the second step happens to be, or it has been suggested that the second step could be H2 will be reacting with one of the BRs to form HBr and H free radical, and this is the step which is the slowest step. This is then followed by, and therefore the rate law of the reaction happens to be or will be decided with the help of this step 2 reaction. Okay? And then finally the conclusive step of the reaction is step 3, where this H again combines with one of the BR2 molecules to form HBr and Br. And this is again going to be a fast step. Okay? Next thing, rate of the reaction जो होगा इसका, ये slowest step है, तो rate of the, और ये slowest step क्यों है ये भी मैं बताऊंगा। Rate of the reaction happens to be some K, I mean, maybe we can call it K2 and K dash, ऊपर वाले का K1 है इसलिए इसको K2 लिख लिया। So it will be K2 into concentration of H2 into concentration of Br. ठीक है, but Br is no species which is present in reality, ना तो हम उसको यूज कर रहे हैं ना ही वो प्रोडक्ट में आ रहा है। So रेट लॉ इक्वेशन में
डेफिनेटली हमारे टर्म्स जो रहने चाहिए वो रिएक्टेंट के फॉर्म में रहने. So we need to find a relationship in order to replace the concentration of Br with the concentration of Br2. That can be done with the help of equation number 1, which we have found out the equilibrium thing. यहाँ पर Br is going to be equated to Br2 into K equilibrium raised to the power half. ठीक है. So K2 into K equilibrium into concentration of Br2 raised to the power of half. Or this is going to be concentration of H2 into the rest of the things. This is K, capital K, equilibrium, concentration of Br2 raised to the power half. यहाँ से एक चीज और हम लोग को समझ में आती है. यहाँ पर रेट कांस्टेंट जो है हमारा नेट रेट कांस्टेंट, that is going to be bit different from the rate constant of the slowest step. This is our rate constant combined or net rate constant. Okay. This rate constant is going to be different from the observed rate constant of step 2 or expected rate constant of step 2. Okay. This deviation or this deviation in equivalent rate constant, equivalent rate constant with respect to the original one, equivalent rate constant with respect to original one. This also helps us in uh, establishing what could have been happening in between. ठीक है. तब ये इससे मतलब नेट वाला जो है वो किसी पर्टिकुलर स्लो स्टेप के एक्टिवेशन एनर्जी या फिर केस के रेस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में कितना वेरी कर रहा है, कितना वेरी कर रहा है, दैट इज अनदर गाइडलाइन फॉर अस और अनदर थिंग वी ट्राई टू एक्सप्लोर. ठीक है. नॉट ओनली दैट, ये के साथ साथ हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह कंपैरिजन भी करते हैं in order to gaze about this thing, the hidden properties, that is uh, the steps in the reaction. Yeah. एक और last example and then we will move to the second part of it. Example 5, we have reaction NO reacting with O2
2NO reacting with O2 to form 2NO2. The experimental rate law happens to be K into concentration of NO square plus into O2. ठीक है। अब एक तो हमारे पास रास्ता होता है कि इसको देख करके हम ये बोल दें कि दिस इज अ elementary step reaction and this is an elementary reaction single step reaction जिसमें दो मॉलिक्यूल इसके और एक मॉलिक्यूल इसका एक साथ कंबाइन कर रहे हैं एंड ये दो चीजें फॉर्म हो जाए। ठीक है, फेयर इनफ। सो बेसिकली इसके लिए हमारे पास तीन इक्विवेलेंट पाथवे होते हैं। पहला पाथवे जो होता है लेट अस कॉल इट ए एंड दैट इज एलिमेंट्री स्टेप जहां पर 2NO2 2NO directly reacts with O2 to form 2NO। ठीक है, सिंगल्स। दूसरा वाला जो होता है दैट इज अ टू स्टेप रिएक्शन वेयर स्टेप वन is something like this: NO and NO reacts with each other to form N2O2. This is a fast equilibrium, fast equilibrium, and this is followed by step 2, which is N2O2 plus O2 reacting to produce 2NO2, and this is a the rate determining step. Why this is rate determining? ऑक्सीजन के बॉन्ड्स ब्रेक हो रहा है यहाँ पर। नाइट्रोजन ऑक्सीजन there is a bonding between nitrogen which is being created to form N2O2। ठीक है, so only bond formation is happening, therefore activation energy काफी कम रहेगा and the rate of reaction is going to be much faster। ठीक है, whereas N2O2 के केस में this molecule is going to interact with oxygen molecule. A bond between nitrogen and oxygen is going to be formed, and the bond between nitrogen is going to be broken down simultaneously। ठीक है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक है। नाउ ऐसे सिनेरियो में व्हाट हैपेंस इज there are certain number of bond breakings which are taking place, and therefore this happens to have a higher activation energy and hence this speed of the reaction happens to be slower। Okay, there is another set of mechanism which is possible looking at this, and that is again going to be a two-step mechanism. Step one would be NO plus O2 giving us OONO, oxygen being bonded together, this oxygen being bonded to nitrogen, and then nitrogen is bonded to oxygen, and this should be a fast equilibrium state. And then in step 2 there happens to be another NO molecule coming and interacting with OONO to give 2NO2, and this happens to be the slowest step। अब दोनों ही केसेस मतलब इसमें तो ठीक है हमको डायरेक्ट रेट लॉ ये वाला मिल जाता है। इस वाले केस में दिस हैपेंस टू बी द स्लो स्टेप, एंड स्लो स्टेप है तो रेट जो होगा वो होगा मेरा
again K1, K minus 1, and maybe K2. The rate is going to be equal to K2 into concentration of N2O2 into concentration of O2. First वाले step से we will have K1 by K minus 1, that is K equilibrium, is equal to concentration of N2O2 divided by concentration of NO का स्क्वायर. ठीक है, इसके concentration के बदले में मैं इस चीज को रख सकता हूँ and my rate will become equal to this into K equilibrium into NO का concentration का square into, and that defines my experimental rate law. थर्ड वाले स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो तीसरे वाले से भी हमको सेम चीज मिलेगा. इट्स नॉट गोइंग टू बी एनीथिंग डिफरेंट. ठीक है, दिस इज द स्लो स्टेप. द स्लो स्टेप है तो यहाँ पर मान लो K1, K minus 1 and K2 है. So रेट अगर लिखने जाएंगे तो इट इज गोइंग टू बी K2 into NO into concentration of OOM. और पहले वाले रिएक्शन से हमको मिलेगा K equilibrium is equal to K1 by K minus 1 into is equal to concentration of OONO divided by concentration of NO into concentration of O2. Yeah. That is, इसका concentration is equal to this equilibrium into these concentrations. So we can replace it इस entity को. So it will become NO a concentration into K equilibrium into NO. So it will become K2 into K equilibrium NO square. Is it okay? अभी a point ये है कि which of them is the most appropriate one to explain all the behaviors. It happens to be this one which is able to explain all the behaviors. This type of ये actually as an intermediate form हो रहा है during the reaction, but under no circumstances we have ever been able to uh, have any experimental proof of existence of this particular compound OONO in the reaction mixture. ठीक है, जब reaction process हो रहा है उस period में there had been no evidence of presence of this particular compound. ठीक है, however presence of this particular compound, this particular intermediate compound or short-lived compound has been established during the reaction and therefore this mechanism has been obtained. ठीक है, so ये 5 एग्जांपल्स के थ्रू मैं ये इलस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा था कि how to choose upon from the given options, how to choose upon the set of mechanism uh, which is proposed for our given reaction. ठीक है, they are guided by, मैंने जैसे शुरू में बोला, they are guided by bonding principle, they can be guided by thermodynamic principle, and obviously rate law is the key thing which guides or which creates the background of all these steps. Making sense? Hello. Yes. Yes, sir.